Hello students, in this video we will solve miscellaneous exercise. So in miscellaneous exercise introduction we will not learn any new concept but कुछ examples करेंगे जिसके थ्रू कुछ भी additional nuance होगा questions में miscellaneous exercises के तो वो हम समझेंगे. ठीक है. So starting with example number 18. So यहाँ पे आपको given है that sin x is equal to 3/5, cos y is equal to -12/3. We know that x and y lie in second quadrant. So sine is positive in second quadrant but cos is negative in second quadrant. So we have to find the value of sin x plus y. तो सबसे पहले तो sin x plus y का फॉर्मूला क्या होता है? sin x cos y प्लस cos x sin y. ठीक है. अब वी ऑल्सो नो दैट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. दैट मीन्स देखो हमें साइन एक्स का वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमें कॉस वाई का वैल्यू पता है, तो हमें कॉस एक्स और साइन वाई का वैल्यू निकालना है. ठीक है. सो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. साइन एक्स का वैल्यू क्या है? 3/5. सो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 16/25. क्योंकि cos lies in second quadrant, sorry, x lies in second quadrant, so cos x will be -4/5. Similarly sin y का वैल्यू निकालेंगे. sin square y is minus cos square y. cos y का वैल्यू हमें गिवन है -12/13, so this will be -144/169. so sin square y का वैल्यू will be 25/169. अब y also lies in second quadrant, तो sin y will be positive, which will be 5/13. Now we will put all the values in this equation to get the value of sin x plus y. So sin x plus y is equal to sin x, which is given in question, multiplied by cos y, which is 12 minus 12 into 13, plus cos x. cos x हमने निकाला है, which is -4/5, मल्टीप्लाइड बाय साइन वाई विच इज़ 5/13. अब हमारा एलसीएम जो है वो 5 into 13 रहेगा. ठीक है. एंड ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो -36 -20, सो दिस विल बी -56/5. 1 carry 65, right? So -56/65 is the answer to your sin x plus y. Okay, moving on to example number 19. So here we have to prove that cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 is equal to sin 5x and sin 5x by 2. So considering the left hand side here, so we have cos 2x cos x by 2 cos 3x cos 9x by 2. So what we will do here is we will multiply and divide the equation with 2. So multiplying the whole equation and dividing the whole equation by 2, we will get 2 cos 2x cos x by 2 minus 2 cos 3x cos 9x by 2. तो now we know identity जो है हमें पता है that 2 cos a cos b is equals to cos a plus b plus cos a minus b. Okay, so we will use this identity in this question, in this equation. So we have 1/2. So 2 cos a cos b, we will get cos a plus b plus cos a minus b. सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव साइन को बाहर रखेंगे या पहले मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है. सो यू विल गेट cos a plus b cos a minus b. Okay, so once you have this, let's solve it individually. So we get, let's simplify it basically. So we get cos 5x by 2 plus cos 3x by 2 minus cos 15x by 2 minus cos माइनस कितना हो जाएगा ये 3 to the 6 minus 15x by 2. ओके ओके. सो एनीवेज जो कॉस का यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इट विल रिमेन नेगेटिव.
ओके सॉरी, यहाँ पे -5 आएगा, सॉरी 3 है क्योंकि 6x विल बी पॉजिटिव राइट. सो वेट अ मिनट, लेट मी. ओके सो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो 6x माइनस 9x, दिस विल बी -3x अपॉन 2. ओके 6x, no, what is happening? Sorry, it's 3x by 2. Okay, so let's further simplify it. So we have 5x plus 2 plus cos 3x upon 2 minus cos 15x upon 2. ये माइनस साइन अंदर ही रह जाएगा बिकॉज cos में we know that sign does not come outside. ठीक है, सो दिस इज़ आवर इक्वेशन. इसको फिर फर्दर हम करेंगे सिंप्लीफाई. तो कैसे कर सकते हैं? what we will do is we will use a formula here which is we will cancel this thing out. So we get cos 5x upon 2 minus cos 15x upon 2, and then we will use a formula. So cos A minus cos B का formula we will use, which is minus 2 sin A plus B by 2 into sin A minus B by 2. So putting that here, we get minus 2 sin 5x plus 15x upon 2 divided by whole 2 into sin 5x upon 2 minus 15x upon 2 upon 2. Okay, so ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं पहले, तो we have minus sin we get 20x upon 2 10x, this get 5x. Then here we have minus 10x minus 5x upon 2. So we get here minus 5x upon 2. अभी साइन का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव. सो दिस विल बी इवेंचुअली sin 5x and sin 5x upon 2, which is your RHS. Moving on to example number 20. So in example number 20, we have to find the value of tan pi by 8. So to find the value of tan pi by 8, we will assume that x is equals to pi by 8. This implies that 2x is equals to pi by 4. Okay, so we know the value of pi by 4, that's why. So we have tan 2x. इसका formula we know, 2 tan x 1 minus tan square x. So tan 2x is what? Tan pi by 4 minus 2 tan x 1 minus tan square x. So tan pi by 4 is 1. So we have 1 is equal to 2 tan x 1 minus tan square x. So this will become a quadratic equation, and we will then use it to solve the value of tan. So quadratic equation is of the form this. अगर मैं tan x को is equal to y मान लूँ, तो my quadratic equation will become y square plus 2y minus 1 is equal to 0, which can be जिसका solution है plus minus under root 2. I am not solving it, I am just referring the example here. So if you solve this quadratic equation, you will get y का value this. Now y is equal to tan x, which is equals to tan pi by 8. So tan pi by 8 का value is minus 1 plus minus under root 2. But again, we know that pi by 8 lies in the first quadrant, so tan is positive there because all the values are positive in the first quadrant. So we will eliminate the negative value and we will only consider the positive value. So negative value कौन सी होती देखो, -1 plus under root 2 minus 1 minus under root 2. So we will eliminate this value and we will consider the positive value. Moving on to example number 21. So we are given that tan x is equal to 3 by 4 and x lies between 3 pi by 2 and pi. That means x lies in the third quadrant. Okay, and tan x is negative in third quadrant.
we have to find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. ठीक है. Okay, so since we have to find the value of x by 2, if x lies between pi and 3 pi by 2, then x by 2 will lie between pi by 2 and 3 pi by 4. That means x by 2 will lie in which quadrant? It will be less than 90, right? It will be less than 3 pi by 4. So 3 pi by 4 is what? 3 pi by 4 is 135, which is second quadrant. So x lies in second quadrant here, and second quadrant sine is positive, cos is negative, and tan is negative. Okay, so we have the value of tan x already. So tan x is 3 by 4, we know. So we will use this identity, which is secant square is equals to 1 plus tan square x. So from here we will find the value of secant square x, which will be secant square x will be 25 upon 16. That means sine square x will be cos square x will be 16 upon 25. Now x lies in third quadrant, that means cos will be negative. So cos x will be minus 4 upon 5. Now we know, if we already have the value of cos 2x or cos 2a, we know that cos 2a is equal to 1 minus 2 sine square a. So if I consider a as x by 2, then cos 2a will become cos x. So using this identity to find the value of sine x by 2, what I am going to do is, I am going to say minus 4 by 5 is equals to 1 minus 2 sine square x by 2. Okay, so this will give me 2 sine square x by 2 is equal to 1 plus 4 by 5. So 2 sine square x by 2 is equals to 9 by 5. Okay, and this will become sine square x by 2 is equals to 9 upon 10. And since x by 2 lies in the third quadrant, no, it lies in the second quadrant, so sine will be positive. So sine x by 2 will be 3 upon under root 10. Okay, so since we already have the value of sine, we can easily find the value of tan and cos. So how to find the value of cos? We know that cos square x by 2 will be equal to 1 minus sine square x by 2, which is 1 minus 9 upon 10, which will be 1 upon 10. So cos x by 2 eventually will be negative because it lies in the second quadrant, and its value will be minus 1 upon under root 10. And then tan x by 2 will be sine upon cos, which is minus 3. Okay. Moving on to the last example, that is example number 22. So in this we have to prove that cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equals to 3 by 2. Okay, so again we will consider the LHS that is given in the question. Now cos square x ko we will write, so we know that cos 2x is equals to 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम फर्स्ट टर्म को रिप्लेस करेंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू, अगर हमें cos स्क्वायर एक्स गिवन है तो इसको cos 2x की फॉर्म में हम लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 अपॉन 2. तो फर्स्ट टर्म को हमने ऐसे लिख दिया. देन मूविंग ऑन सेकेंड एंड थर्ड टर्म में भी सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम. ठीक है, सो वी विल राइट 1 प्लस कॉस 2x plus 2 pi by 3 upon 2, then lastly plus 1 plus cos 2x minus 2 pi by 3 upon 2. ठीक है, दिस इज़ आवर इक्वेशन. इसमें से अभी हम 1 by 2 कॉमन ले लेंगे, तो वी आर लेफ्ट विद 1 plus cos 2x plus 1 plus cos 2x plus 2 pi by 3 plus 1 plus cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3. अब इसमें से 1 1 1 को ऐड कर देंगे, तो वी हैव 3 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस
2x प्लस 2π/3 प्लस कॉस 2x माइनस 2π/3। अब इस पे हम अगेन एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 cos a cos b। दिस इज़ द आइडेंटिटी जो हम इस पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 cos 2x cos 2π/3। ओके, देन 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 cos 2x। अभी cos 2π/3 का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे पाई माइनस π/3। ओके, बिकॉज π/3 पे हमें cos का वैल्यू पता है। सो 1/2 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 cos 2x। अभी cos पाई माइनस π/3 मीन्स कि इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सो यहाँ पे जो cos का वैल्यू है दैट विल बिकम नेगेटिव एंड हमारा आंसर आएगा माइनस कॉस π/3। अभी π/3 मीन्स 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज पे cos का वैल्यू इज़ 1/2। ये माइनस साइन हम बाहर ले लेंगे। सो वी हैव cos 2x एंड 1/2 हेयर। सो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, देन ये cos से ये कैंसिल हो जाएगा। वी विल बी लेफ्ट विथ 3/2 विच इज़ आर RHS।